How many stories you have read where an old man is in love with a young girl, a kid? If a 50-year-old man falls in love or is tempted by a 12-year girl, is it possible or not? What is the age of heart? प्रेम होता है? हो सकता नहीं हो सकता? Love has no boundaries. In literature, people are falling in love with statues. Pygmalion, मूर्ति से प्यार हो जाता आदमी को. Possible है कि नहीं है? Possible है. But we judge it from moral grounds. Morality point of view, we say it bad. What if the girl is sexually teasing him? अब बताओ, no pedophile, लड़की छेड़ रही है उसको. 12-year girl is teasing him. मालूम है तुम्हारा तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है. How a 12-year girl can tease? यार 90s वाले बच्चे नहीं है ये. दिल्ली के बच्चों से मिलो, आपसे ज्यादा जानते हैं. मेरे मोहल्ले के 12th क्लास के बच्चे छत पे बैठ के कोकीन ले रहे होते हैं. एक आया बच्चा मेरे पास स्कूल में पास हो गया होगा. भैया भैया भैया, एंड आई वाज अनमैरिड एट दैट टाइम. भैया ये बोतल रख दो आप अपने घर में. मैंने कहा बोतल मैं रख दूं मेरे घर में? क्यों? भैया वो थोड़ी बच गई, हमने पार्टी वार्टी की थी और ना घर नहीं ले जा सकता. मैंने कहा मैं क्यों रखूं? The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC-NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Modern, postmodern, दोनों में it is very common in both of them, modern and postmodern. Individualism supports the idea that you are just an individual and you do not belong to anybody. You are just a unit. Suppose you are a son, so your relationship, father, mother, because they are focused on everything, that's why I have to write all the names. Otherwise, I would have simply written family. Are you having same relation with everyone? Then let's make this circle broader. Add cousins, maternal cousin, mama का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा की लड़की. Do you have same relation with everyone? Somebody's favorite, somebody is blocked. Now, are you a son and a son to everybody? Are you a son to everyone? Are you brother to everyone? Are you father, mother? Who are you? फिर आप कौन हो? क्योंकि you are not son for everyone, you are not sister for everyone, you are not daughter for everyone. Who are you? Then make the circle bigger. Take it to society. Are you a son and daughter to society? Or a father and mother to society? Or for somebody you are a teacher, somebody you are a student, somebody you are a for someone you are a customer. कितना role play करते हो? Every individual playing a role. The moment you leave my class and you go to take your auto, for that auto wala, who are you? उसको फर्क पड़ता है? Son, daughter, talented, artist, कोई फर्क पड़ता है उसे? ऑटो में आप कस्टमर हो. अब कोई फ्रॉड कर रहा है मेट्रो स्टेशन में, फर्जी कार्ड बेच रहा है, उसके तुम टारगेट हो. सो व्हाट इज एक्चुअली योर रियल आइडेंटिटी? हु आर यू? इट्स नॉट ओनली द syllabus thing that you're going to study, you're actually understanding literature. This will open up your mind. मैं 2 घंटे टीचर हूं क्योंकि 2 घंटे I have to play that role. So frankly, you are playing the roles. So if you are playing the role, taking your relations with everybody, you start focusing on yourself. Modern novels focus on you. Leave them. How they are connected to you, and in these connections, who are you? That is individualism. Individual identity. Multiple perspectives. So modern novels, because somebody is hero, somebody is villain. हमने हमेशा हीरो हीरोइन पढ़ी है. भगवान राम ने
रावण का संहार किया। किसने सीता को चुराया? एब्डक्शन, रावण ने। What was the fault of thousands of soldiers of Lanka? कोई फॉल्ट थी उनकी? हाँ। So that's my point. That if you're just a god, just fly, meet Ravan face to face, kill him. Problem solved. You are capable of killing. So one hero can be. एक simple चीज है ना. One country's soldier is another country's terrorist. हमारे लिए कसाब टेररिस्ट है, जहां से आया होगा वो तो उसकी मिसाल देते होंगे, चैप्टर पढ़ाते होंगे, जहां से भी आया होगा, पीओके से आया, पाकिस्तान से आया, कोई ना कोई तो उसको हीरो बोलता होगा. somebody must be taking him as a hero. So point is that you have been given roles, so all you do is role playing. So this makes you question that society from your point of view. Third point that you have to write down in isolation and individualism, it is multiple perspectives. Third point of moderns, multiple perspectives. किसको स्कॉलर बनना है आप ऐसे? Who wants to be a professor, a good professor, knowledgeable professor? 1, 2, 3, 4, 10, all. Please tell me, what will you do once you become a great professor? चलो बन गए. Now what? Your journey to become a great professor, you are here. Now what? बन जाओगे 10 साल में, 12 साल में, 25 साल में. What? उसके बाद what? मैं कोई मिशन थोड़ी लेके चल रहा था कि मुझे फेमस प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है. आई यूज टू टीच. हंसते खेलते पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक करते. क्लास में कोई बोर नहीं होना चाहिए बस, और फैक्ट्स सही होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. अब लोगों ने कहा चलो ठीक पढ़ा रहा है, बन गया. लेकिन अब क्या करूँ? मेरा तो टारगेट भी नहीं था. यू हैव योर टारगेट. व्हाट विल यू डू? सपोज यू आर अ प्रोफेसर इन JNU. यू आर सिटिंग विद बिग प्रोफेसर्स, यू आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ लिटरेचर एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू मीट यू, गेट क्लिक्ड विद यू. आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? Satisfaction of achieving that goal for 1 day, 2 days, 6 months. जो JNU प्रोफेसर है वो सारे दिन थोड़ी ऐसे घूमते हैं अभी कि मैं तो JNU प्रोफेसर हूँ. हो गया एक बार. मैं भी बहुत ऐसे घूमा था दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके, जब असिस्टेंट प्रोफेसर बना था मैं भी थोड़ा ऐसे था. 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल. Then what? And are you just a professor? Will you be just a professor? You'll get back to your home. There you will be playing a role. तो दुनिया भर का प्रोफेसर बन के क्या करोगे if your other life is not happy? Point is, and then you are the greatest professor and some chai wala is earning more than you. What will the point? You will say, sir, no, sir, chai wala had no respect. I have respect. Who cares? That chai wala has more followers than you. तो social media respect तो उसके पास ज़्यादा है. And people are inviting him to cut ribbons, that bada pav girl and all. उनको ribbons कटवा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुला रहा कोई. What is the point? Satisfaction is again not stable. There is no last limit of earning money. जिस दिन 1 करोड़ कमाओगे 2 करोड़ सोचोगे. Point is, modern novels deal with multiple perspectives. Your success is failure for someone. Suppose you come from billionaire family. Every sibling, every cousin is earning in millions, billions. You want to be a professor. You are getting 90,000 per month. So even if you tell them that I'm satisfied, I'm happy, they're like, अरे ये देखो, सेंट्रो कार से आ रहा है. उनके लिए तो नहीं है वो सक्सेस. फिर I had a student, very rich family. पढ़ना चाहती थी वो, हरियाणा से थी, बहुत अमीर फैमिली. उसके 10-12 मैरिज हॉल थे. आप जानते हो मैरिज हॉल क्या कीमत होती है. ड्यूरिंग मैरिज तो और भी बहुत ज़्यादा होती है सीजन में. उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें क्यों पढ़ना है, टेल मी क्या चाहिए. फादर वाज लाइक अगेंस्ट कि क्यों पढ़ना है. उसका मोटिवेशन था मुझे बस पढ़ना है. एंड फादर लाइक क्यों पढ़ना है. उनका पर्सपेक्टिव, इनका पर्सपेक्टिव. वो अपनी मदर की सपोर्ट से पढ़ नहीं रही. दे शोड दैट वो अपनी नानी के घर चली गई है 6-5 महीने के लिए और वहाँ यहाँ से पढ़ने आई थी.
ऐसे और भी लोग हैं. एक और लड़की पढ़ने आई थी, हौजखास विलेज में थी. उनका रेंट आता है 17-18 लाख का. ये सामने हौजखास विलेज है ना आपका, 17-18 लाख का रेंट आता है सिर्फ. उनके घर में 4th फ्लोर पे शायद घर है या 3rd फ्लोर पे, और उनको बाकी पूरा वो रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं. तो वैसे वो शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस, एक दिन बता रही थी मुझे. शी सेड सर मुझे इसलिए पढ़ना है, आई वांट टू मेक माय ओन लाइफ, आई डोंट वांट माय फादर्स मनी एंड ऑल दीज थिंग्स. उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, फादर स्लैप्ड मदर, सो देन आई फेल्ट दैट इवन इफ यू आर वेरी रिच यू विल हैव टू डू समथिंग टू अर्न. मदर को उन्होंने गमार बोल दिया फादर ने गुस्से में. अपना मोटिवेशन है, बट वो आपका मोटिवेशन आपके लिए मोटिवेशन है, अदर्स के लिए क्या है. और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, द वन हु इज स्ट्रगलिंग विल से अरे यू हैव 15 लाख रुपए रेंट, do something better. Point is, there is no truth, there is no false, there is no lie, it's just multiple perspectives. So it started questioning the relative truth. What is relative truth? The relativity of truth. This is your next point. What is relative truth? Every person has his own truth. हर आदमी का सच अपना सच होता है, विच इज योर नेक्स्ट पॉइंट. देयर इज नो वर्ल्ड व्यू. मॉडर्न नॉवेल्स डू नॉट सपोर्ट, मॉडर्न नॉवेल्स डू नॉट सपोर्ट वर्ल्ड व्यू एंड बिलीव इन relative truth. They believe in relative truth. If you read brave stories, the heroes, heroic deeds, तो इंडिया के brave soldiers, Kargil war, 1970 war, if you read about them, so if we have all the bravery, then the enemy, are they coward? Everybody is coward. उनकी भी 8-10 लाख की सेना है. Do they have their brave people? It's on YouTube. There are 2 Pakistani soldiers, they are talking about Kargil. So they were like, we were approached by 500 soldiers, we were only 5-10 people, 500 soldiers from Indian army attacked us, we kept on fighting. So it is not a lie, it is a truth. Because as they were sitting at the top, we really needed a lot of movement. So our platoons were actually increased in number so that we can have a proper fire. अब वो वहाँ के हीरो हैं. M. Alam, the greatest fighter pilot ever from Pakistan or anybody, any country, has a Guinness Book record of shooting 5 Indian aircrafts in 1 minute. M. Alam का रिकॉर्ड है. हमारी कहानी में हम हीरो, उनकी कहानी में तो फिर रियल कहानी क्या है? Where is the real story? They are hero in their story, we are hero in our story, then where is the real story? वो अमेरिका को पता है. No country will ever say that we have been defeated. 1971 पाकिस्तान की बुक्स में लिखा होगा हम जीते, हमने इंडिया को मजबूर करा, और जो सरेंडर हुआ उसमें बोला होगा धोखा दिया उन्होंने. तो वो सही है, ये सही है. 1970 वॉर में 1 में जो हमने सरेंडर करवाया था 98,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का, वो धोखे से करवाया था. बट दैट इज फाइन, इट इज अ वॉर, सो यू कॉल इट धोखा, वी कॉल इट स्मार्टनेस. अगर आप स्मार्ट हो लड़ाई में तो अच्छी बात है ना. बीबीसी पे न्यूज ब्रॉडकास्ट करवाई गई थी दैट 5,000 पैराट्रूपर्स, 50,000 सोल्जर्स हैव सराउंडेड ढाका, जो कि ऐसा नहीं हुआ था. और वो न्यूज जानबूझ के चलवाई गई थी सो दैट दे इंटरसेप्टेड एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट स्कैर्ड. They thought that 50,000 soldiers have surrounded, 5,000 new paratroopers have landed. तो ये तो मिलिट्री में चलता ही है, झूठी खबरें फैलाना, to create panic. It is a war skill. So point is, where is truth? सच कहाँ है? Truth नहीं है. Truth नहीं है, then you have to accept. You remember the famous line, Ngugi wa Thiong'o, African literature. Until the lion learns to write, history will always glorify the hunter. तो अगर सच जानना है तो दोनों बोलो, दोनों बराबरी से बोलो. नहीं तो सच क्या है? मेरी कहानी में मैं हीरो, तुम्हारी कहानी में तुम हीरो. So moderns question this thing. There is no world view, no idealism, no moralities.
The next one, double consciousness, a term also used in post-colonials. Double consciousness, a term used in post-colonials. Okay, so there was some trouble, right? Somebody was making noise, so I had to go. For a second, I told myself, mic laga hai, teacher hai. So what did I do? I said, class चल रही है. अगर ये माइक नहीं लगा होता, स्टूडेंट नहीं बैठे और टीचर नहीं होता, मैं क्या कहता उसको? मैं हो सकता सिर्फ यही कहता है, भाई उधर जाके चिल्ला, दिख नहीं रहता वो क्लास है. आई वुड सम रूडनेस. ये जो एक सेकंड का गैप लिया ना मैंने सोच के कि माइक भी लगा है, टीचर उस सोच के बोलना है. एंड देन इफ आई कुडंट फाइंड माय वर्ड्स, आई जस्ट डिड दिस. दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग इन मॉडर्न्स. मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, वी आर प्लेइंग रोल्स, हम है ही नहीं कुछ. तो मॉडर्न्स विल क्वेश्चन हु आर यू, पोस्ट मॉडर्न्स विल डाइव डीप, अंदर चले जाएंगे एकदम. हाउ यू आर मेड, यू आर नॉट मेड ऑफ वन थॉट, यू आर नॉट मेड ऑफ वन रिलीजन, यू आर नॉट मेड ऑफ वन कास्ट और जेंडर. You are a construct. Now go for this double consciousness. Who are you, Chanda? Who are you? अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लेंगे आपसे. Who are you? Tell me something which is very real. चंदा को नहीं पता वो कौन है. नहीं, हंसने की बात नहीं है. She has reached to postmodern. I'm teaching postmodern. यही स्टूडेंट होना चाहिए. कह रहे सर मैं तो भूल ही गया मैं कौन हूं. आपने कहा ना हम कौन है. जसलीन, हु आर यू? अच्छा तुम पहुंच चुकी हो पोस्ट मॉडर्न्स में. जस्ट सो व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हर आंसर इज एक्चुअली थ्योरेटिकल आंसर, थ्योरी का पार्ट है ये. So, what do you think? What do you imagine? What do you is you? बहुत सही आंसर है. Still, अपने आप को डिफाइन कैसे करोगे? इंटरव्यू में कैसे बोलोगे? Who are you? Tell me, who are you? बताओ. ज्योति. हाँ, but you said I am Jyoti. So there are 20,000 Jyotis in India. 20,000 ज्योति आराम से होंगी इंडिया में, बहुत कॉमन नेम है. It's not an offense, okay? Reality बताओ. Rishikesh, somebody questions you in the interview, who are you? It looks easy question. It will trick you. Who are you? Simran. So Simran is a student. So are you a student forever? Out of this room, are you a student? So your student identity is one identity, one consciousness. Another identity? Are you a daughter everywhere? Give me a bigger identity. Let's say you're a girl. Gender identity हर जगह एक बार same है. So being a girl and being a student, or being a girl, being a daughter, being a girl, being a daughter-in-law, being a girl, being a mother. This is double consciousness. You are reminded of two personalities. One, the basic gender personality, because one of the biggest identity is gender. You go to Africa, they'll not say she's a boy, she's a girl. So gender construct, one of the biggest difference. It helps you to be identified through gender. Second, your role. Modernism deals with double consciousness. तो कोई मुझे बोले मैं कौन हूँ, मैं यहाँ टीचर हूँ, बाहर नागरिक हूँ, कुछ हूँ, बट वो बोलेगा अल्टीमेटली क्या हो, देन विल गो फॉर जेंडर. फिर साइंटिफिकली हम जेंडर को जो भी बोलते हैं, होमोसेपियंस या मेल को जो बोलते हैं, एंड्रोजेनस समथिंग, वो बोलेंगे. दैट विल बी माई आइडेंटिटी. एंड देन दैट विल बी ऑल्सो क्वेश्चन. Because that's beyond postmodernism. Even the gender will be questioned. Then you will not be able to define yourself that I'm a girl. Because now the girl, the biological structure of a girl has been divided in many parts. So I am a girl but I don't feel like a girl. वो भी एक identity है. That's next topic. वो बाद में देखेंगे.
double consciousness in post-colonials. You are an independent person. We can write like this. Double consciousness in post-colonials and Dalit literature. It is very common there. Also common in black feminism or black study. So you are a human first. First you are a human, then you have been categorized as a Dalit. Second, you are a human, then you are a woman or man. Then third, your first identity, you are a human. Second, in post-colonials, you are a slave, colonized. This is double consciousness. You are reminded of double identities. So I'm a human first, and if majority of my life is dealing with teaching, so I'm an educationist. Double consciousness. So it's not only in my class. If I am at the road and if I really have to abuse somebody in a most vulgar way, my inner conscience will tell me that you're a teacher, you should not use these words. Because I've accepted my double consciousness. आप पढ़े लिखे educated हो ना, आप गंवार नहीं बन पाओगे रोड पे. Even if nobody is watching you. Even if you try to be that, you will not. That's what we call class. That in worst situation you will behave in a proper way. So you're reminded of two personalities forever. That is double consciousness, also connected to stream of consciousness. वहाँ भी उससे connected है ये. Whatever you want to do, you're reminded of your religion. There are so many things you want to do, but if it is not allowed in religion, you will always have that consciousness. You want to do things, but you're always reminded of casteism in India. You will always be conscious about these things. This is double consciousness. That is also narrated in postmoderns. The last one. इसके बाद वाले basics हैं. Any questions? First writer D.H. Lawrence, E.M. Foster, writers dealing with homosexuality, sexuality, various types of things connected to it. D.H. Lawrence, he has been regarded the father of this concept. E.M. Foster, there are some others, but these are the leading ones. What if you are someone else, but you can't speak in society? You can't tell. Nobody is ready to listen. Nobody will help you. People will judge you. So you will have to hide your personality, or you can simply say the sexual orientation. You'll have to hide it. India is not open for many things. So even if there are parades, even if there are people showing that we support, deep down a lot of people don't accept it. जब आप queer studies करोगे तो we'll talk about gay parades. इस बार तो questions हैं. Now they're asking questions from this direct literature. So you go and support the queer parade, you be a part of it. Will you be able to tell your family members, आज मैं यहाँ गया था, या आज मैंने इनको support किया? हाँ, तो कुछ exceptional families हैं, सब पढ़े लिखे होंगे, उस level पे modern होंगे, लेकिन सबको नहीं बता सकते ना आप. फैमिली को बता दो, खुद भी कितना एक्सेप्ट करो, वो भी है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. एवरीबडी वॉन्ट्स भगत सिंह, बट नोबडी वॉन्ट्स भगत सिंह इन द हाउस. पंजाबी में कहावत है, हीर ता जन्मे पर गवान नहीं आते. वी ऑल वॉन्ट हीर, रांझा, बट नोबडी वॉन्ट्स अ हीर इन द हाउस. घर में किसी को हीर नहीं चाहिए. दैट्स रियलिटी. सो इफ योर माइंड सेट, इफ योर characteristic, if your sexual orientation, it is not being accepted, how will you reveal it? There are so many connections. Why Arthur Henry Hallam, the friend of Tennyson, who died, it took 17 years and kept on writing about him. Was it more than that? A normal friendship se zyada. Shakespeare wrote 126 sonnets for a man. Was it there? We don't read, we don't accept. One writer wrote Mahatma Gandhi is gay. एक राइटर ने लिखा महात्मा गांधी गे है, तो उस पर प्रोटेस्ट हो गया.
People went to the court, matter was taken to Supreme Court because this book was not being published in India. So how I got to know this, I read that news. No poetic license in India, says Supreme Court. That was the headline. Because that writer said, I have poetic license. Poets can have any imagination. So writer said, I have poetic license in India. Supreme Court ne kaha, no, there is no poetic license in India. So what is poetic license? That poets can coin new words, coin new imageries, poets are allowed to dream anything, poets can write anything. That is poetic liberty. आप कुछ भी लिख सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं, इंडिया में नहीं कर सकते. What was his main issue? That he said, he portrayed Mahatma Gandhi as homosexual. हाँ ना? What do you think? It can be or not. Vikram Seth, famous writer, suitable boy, is a homosexual, openly accepted. Last poet laureate. That last poet laureate, she recently has resigned. She was a homosexual. एक और प्रोफेसर है DU में, he is still working in touch, so I don't want to name. ऐसे और भी लोग हैं. So, was Gandhi a homosexual or not? Or it doesn't matter? Yes, it doesn't matter. So after this article, another article that I read next day in Hindu, that was written by Arundhati Roy. Arundhati Roy, she wrote that article, and the opening line was, "Come on India, grow up." Opening line, "Come on India, grow up." We respect Gandhi for his contribution, not for his sexuality. हमेशा थोड़ी गांधी जी को respect करते हैं that he was straight. We respect him or we appreciate his contribution. It's because of his acts, sacrifices, contributions. So the point is this: these writers started exploring it. Earlier, it was hidden. D.H. Lawrence first time talked about the, sexual tension in family. Rainbow. Women in love. First time deal with homosexual characters. Two sisters, Ursula, Gudrun. Homosexual characters. How many Victorian books you have read dealing with homosexuals? Tell me one book in your last ages that we have covered in syllabus. Did you read any book dealing with homosexuals? Goblin Market, was it a clear reference or the critics have found it? Anything open? That's the difference between moderns. Moderns started dealing with these things in an open way. And I'm taking British examples. If I take world literature examples, it will become more easy to explain. How many stories you have read where an old man is in love with a young girl, a kid? कितनी stories में आपने देखा कि 50 plus years person has fallen in love with some 12-year girl? And how many stories? Is it good or bad? If a 50-year-old man falls in love or is tempted by a 12-year girl, good or bad? Moral grounds पे गलत है. Is it real or not? होता है नहीं होता है? Is it possible or not? Why are you bringing those bad words, pedophile? What is the age of heart? प्रेम होता है? हो सकता नहीं हो सकता? Love has no boundaries. In literature, people are falling in love with statues. Pygmalion, मूर्ति से प्यार हो जाता आदमी को. तो possible है कि नहीं है?
पॉसिबल है, बट वी जज इट फ्रॉम मॉरल ग्राउंड्स, morality point of view, we say it bad. What if the girl is sexually teasing him? अब बताओ, no pedophile, लड़की छेड़ रही उसको. 12-year girl is teasing him. मालूम है तुम्हारा तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है. हाउ अ 12-year girl can tease? यार 90s वाले बच्चे नहीं है ये. दिल्ली के बच्चों से मिलो, आपसे ज्यादा जानते हैं. मेरे मोहल्ले के 12th क्लास के बच्चे छत पे बैठ के कोकीन ले रहे होते हैं. एक आया बच्चा मेरे पास, स्कूल में पास हो गया होगा, भैया भैया भैया, एंड आई वाज अनमैरिड एट दैट टाइम. भैया ये बोतल रख दो आप अपने घर में. मैंने कहा बोतल मैं रख दूं मेरे घर में? क्यों? भैया वो थोड़ी बच गई, हमने पार्टी की थी और ना घर नहीं ले सकता. तो मैंने कहा मैं क्यों रखूँ? फिर आई रिस्पेक्टेड हिम. मैंने कहा वो मेरा जो गार्डन सा बना हुआ है छोटा सा, उसे किसी गमले के पीछे रख दो और ले जाना. तो बच्चे नहीं है वो. Now tell me, where are your moral grounds? That 12-year girl, she knows that she is being stared. She knows that he's looking at me and then she teases him sexually. अब बताओ गलत है या सही है? Where are your moral grounds? अब गलत नहीं है? मतलब आदमी करे तो गलत है. And now forget love. It is not love. Chalo. So whether wrong or right? Wrong. Who are you to decide somebody's life? We are into moderns and postmoderns. It is no more moral ground. तुमसे कौन पूछ रहा है? Yes. तुम हंसते हंसते पढ़ रहे हो ना, लेकिन हंसते हंसते डीप बात है. Who are you to decide? Earlier writers were not talking about this because they would have been beaten. पहले को लिखता तो धुलाई हो जाती. ये क्या लिख के ले आए? Modern writers started experimenting with these things. What I'm talking about is a Russian world classic, Vladimir Putin, Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, famous book Lolita, most sensational novel ever written, banned in many countries. इंडिया तो वैसे भी रेडी नहीं है इन सब चीजों के लिए. लॉलिता, व्लादिमीर नाबोकोव. अमिताभ बच्चन played a role in the movie based on Lolita, निशब्द, very false. उसमें तो थोड़ा जस्टिफाई किया है. उस लड़की को 17-18 साल का दिखाने की कोशिश की है. रियलिटी देयर वाज 12. निशब्द, speechless. Because that 70-year-old man falls in love with or sexually attracted towards that 17-18-year-old granddaughter's friend. So he was like that, nobody will understand, nobody will accept. But it happens. Realities hai ye. It happens. So modern novels, as I told you, they started bringing truth from those layers of society. They dive deep, found truth and see this. They started presenting things without thinking about moral grounds. So ये possible है. We thought that okay, the girl is victim. नहीं, ऐसा नहीं है. She is equally involved with him, and they are so much possessive for each other. Hero, Professor Humbert, marries girl's mother to continue his affair with the daughter. उस daughter से affair continue करने के लिए, and there are so many lines which is direct, dealing with explicit scenes. There are many words, there are many scenes like this. And he gets married to the mother of that girl. Later the mother finds out. And then when she runs out of her house, she faces some accident, she dies. And then they continue the affair. But was it only sexual affair? क्योंकि ये छोटा मोटा novel नहीं है, world classic है. As they're growing together, he also harbors the emotion of a father. Electra complex. So he's involved, which looks like a relationship, and it's not that love wala thing. It is the gratified desire. That professor in an early age lost his love, childhood friend. So he sees that girl after many years,
and she reminds of childhood friend. They continue the affair, which becomes a sexual affair, but living together, growing up together, as he has his own age, he also harbors the feeling of a father. Why silent? अरे sugar daddy. लंदन विदेश नहीं जाके देखे, foreign countries को पढ़ो, you'll understand. There are many people, those are billionaires. So they find out these kind of affairs. They find some 18, 19-year-old girl, they'll fund their education and everything, and they have their affair. ये concept यहाँ से आएगा. This becomes complex. You will not understand who is villain, who is criminal, what should be done. This will trick you. ये ऐसे novels हैं ना, आपको involve कर लेंगे, and you'll start thinking कि होना क्या चाहिए. Just like this, Lawrence came with Rainbow and Women in Love with these two girls who are lesbians, also called The Sisters. These two novels were published separately under the title The Sisters. The Sisters. E.M. Forster wrote Morris. E.M. Forster was also a homosexual. Question है, all of these books have been asked in exam. Morris, another character that deals with homosexuality. So while people remember E.M. Forster for Passes to India, there are questions in it that has been asked from Morris. Morris is a novel. Now, modern novels will simply make you understand that if you are physically involved, that doesn't mean you are in love. And it doesn't need love, which is actually immoral on morality grounds. हमें लगेगा कि ये तो गलत है, तो पाप है. रियलिटीज ऐसी हैं क्या? What reality? हाँ, people are together. There is no love, no strings attached. आप ही तो मूवी देख के आते हो इस तरह की. No strings attached क्या है? दिल्ली तो बहुत कॉमन है. जब मैं आया था शुरू में डर गया था, देखो यार क्या माहौल है, दुनिया तो बहुत आगे है. अब समझ आ रहा है दुनिया बहुत आगे है. कहां से आगे, कैसे आगे दुनिया चल रही है. लेडी चैटरलीज लवर, वर्ल्ड क्लासिक. नेटफ्लिक्स पे सीरीज है. I haven't watched it, but I've read Lady Chatterley's Lover. World classic, groundbreaking novels, banned novel. 1928 publication, banned. This lady married in a rich family, Mr. Chatterley's wife. Her husband, after some accident, is physically inactive. So, army, war veteran. So, her husband was in some war, gets hit by a bullet, some injury that makes him inactive, sexually inactive. So what we have read till now, Elizabethans, what we have read, Victorians, that live your life, be loyal, realities, and I'm not saying everybody's reality, some hidden realities. I'm not justifying this and I'm not saying that okay this is truth, no. But individual story, forget the world. दुनिया लॉयल है, अच्छी बात है. But somebody somewhere may find out a solution. Lady Chatterley finds out one of her assistant, Oliver, some servant, gamekeeper, is servant, Olive Mellors, पूरा नाम है, Oliver बोलते हैं. You can call it Olive Mellors. Famous name है, so just write down the full name. Olive Mellors. Single name. So they have infatuation, then physical need. She is with him. Olive Mellors starts thinking that the rich woman has fallen in love with me, so I may have my dreams fulfilled. I'll become rich. But then she clears it. It's just an affair. You are nobody. Marxist point of view, say. The Marxist tradition. There is a scene where Olive Mellors want to be with her and a tension is going on. So the scene is like this. There are some stairs. Lady Chatterley is here. Olive Mellors is standing here. She says, this is the gap between you and me.
class gap. It means if I'm physically involved with you, that doesn't mean I'm in love with you or I'm going to compromise my social standards or all the stories you have read that princesses left their castles for a poor man. हर कहानी में जरूरी नहीं है. The moderns came with these realities also. और ये सब क्या है? These are human emotions, human personalities, human characteristics which were unexplored, which were never talked about. ये भी realities हैं. आ रहा समझ नहीं आ रहा? बैपो क्या हुआ? Looking confused. बैपो जैसे गुफाओं में रहते थे. हाँ, वैभव को टेंशन हो गई फ्यूचर की. वाओ, बट आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ थिंग. अलग ही यूनिक पॉइंट है. तो वैभव से इससे पहले गुफाओं में रहते तो वही ठीक था. हाँ, खाया पिया और कोई नौकरी का टेंशन ना, बहुत सारे रिलेटिव्स ना मोरालिटीज, होमोसेपियंस जैसे रह रहे थे. फर्स्ट केव मैन. हाँ हाँ, जब गुफाओं में रहते थे केव मैन तो उस टाइम ये सब थोड़ी होता था. मोरल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशंस, और कोई किसी का अलग कोई कंफ्यूजन. बट यू लुक सो सीरियस विद दिस थिंग. जो बीत गया वो बात गेट्स ओके. थिंक अबाउट फ्यूचर. उसका तो कुछ कर नहीं सकते, आगे का देखो. एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी? नाउ सम बेसिक पॉइंटर्स. ये मेन क्रक्स था. बेसिक पॉइंटर्स modern writers will deal with. They will say life has no meaning. Life is a waste. Modern writers will talk about T.S. Eliot will deal with these things. Futility of life. जिंदगी बेकार है, कोई मतलब नहीं है लाइफ का. क्यों जिए, क्यों मरे, किसी को फर्क नहीं पड़ता. किसी को फर्क नहीं पड़ता. लैला मजनू को पत्थर मार मार के मार दिया था. तो किसने मारा था? Who killed लैला मजनू? Their own people. अपने लोगों ने. और आज मरने के बाद आप उनके नाम लेते रहो, पर उनको तो नहीं मिला कुछ लाइफ में. उनको कुछ मिला तो आपको तो people need symbols, people need some references, but ultimately ask Laila Majnun that we will allow you to live together but you will never make history. What will they choose? Exactly. वो बोलेंगे हाँ हमको जीने दो, हमको हीरो नहीं बनना है. So all these love stories में, the great love stories, Sheri Farhad, Heer Ranjha, Sahiba Mirza, tell me one successful love story where they survived. They all died. So these love stories are actually taken as a message that you fight against society, you will be killed. The message kya? Message is that whatever you're doing, it is ultimately meaningless. Then people have lost communication man to man. ये तो आज के ज़माने में और अच्छे से समझ में आएगा. You find people, they sit in train, bus, flights, they don't talk to each other. Many years back, before internet, जब इंटरनेट नहीं था तो हम बस में अपन, जैसे मैं जाता था पढ़ने बस में, मेरे घर से 1 घंटे दूर, 1.5 घंटे दूर गंगानगर के लिए, तो बस में हम पहचानते थे, ये वाला भाई यहाँ का पढ़ता है, वो दीदी वहाँ पढ़ती है, ये मेरा दोस्त है, ये बस वाला है, ये वो एंड ऑल. वी यूज्ड टू टॉक. तो पहले बस में लोग साथ बैठते, पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन द बस टुगेदर, दे विल बिकम फ्रेंड्स. पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन द ट्रेन टुगेदर. 2 मिडिल क्लास फैमिलीज रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में साथ बैठी हुई हैं, घर से पराठे नाश्ते आए हुए हैं, बातचीत हो रही है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन गए. नाउ यू हैव योर हेडफोन्स,
You have internet, you have your Instagram, downloaded Netflix movies, we don't talk. So communication gap, man to man. ये उस समय की बात है. आज तो you can understand. Then man to God. What is your relation with God? Not offering some prayers. That is mugged up thing. What is your actual connection with God? What was the last time you truly felt that you're somewhere connected to some superpower, some spiritual thing? Offering prayer, which has become a part of life, that you have taken bath, then you have to go to the God, say some lines. That has become routine. पर कभी ऐसा हुआ है कि आज दोपहर के 2 बजे हैं, which is not a time to pray. आज बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं God से, खुद से बात करते हैं. So man has left connection with God, man has left connection with himself. आप अपने आप से कब बात करते हैं? What was the last time you had a word with you? The best person you can talk to you. That person is you. खुद से कब बात हुई last time? क्या ईशा बोला खुद को कभी? क्या ईशा पढ़ ले, अभी भी टाइम है. हाँ? ऐसा हुआ है? लवप्रीत खुद से बात हुई कभी? खुद को बोलो, अभी भी क्लास चले जाओ, पैसे दे रखे मैंने. क्लास में आओ. सिमरन खुद से बात. गाइस, लावेश ऐसे मन में खुद से बात करते हैं. क्लोज योर आईज. आज करना. हाँ, बट इट्स नॉट ओनली सरफेस लेवल. अंदर झांको. थिंक हु यू आर, व्हाट यू डूइंग. एक तरीके से जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, टू डू लिस्ट बना लो. दैट इन एवरी डे 5 minutes टॉक टू योरसेल्फ. So try to find out those things in you. अपने आप से पूछो, was I good to everyone today? Was it bad? Could I have controlled my words today? क्या मैं उसको आज उल्टा सा बोलने से पहले कंट्रोल कर सकता था? खुद से बात करो. It will help you. So they're saying this, that we have lost all these things. Then the biggest thing, we have lost cultural roots. T.S. Eliot will talk about these things. W.B. Yeats will talk about these things. Cultural roots. We have lost it. Moderns. These are basic moderns. Religious roots. Religious roots. How far we are following our native culture? Diwali आ गई है. You can feel this in the air. Diwali thing. So all these advertisements, which is part of culture study, this lecture will also be connected to culture study. How they are promoting Diwali celebration. Any advertisement which is not trying to sell anything and just says that this Diwali, sit with your family, talk to your grandfather, help your grandmother, talk to your mother about her childhood. This Diwali, just give time to your family members. Talk to a friend you have never talked. You have stopped talking. नहीं, वो क्या बोलेंगे? This Diwali, अपनों को लाइए और करीब. उसमें दिखाएंगे that you don't talk to your friend and you have taken iPhone 16 and that friend hugs you. The message is iPhone 16 ले लो. And what are they selling? मिठाई कौन सी बेच रहे हैं? कैडबरी. हाँ, डेयरी मिल्क. कुछ मीठा हो जाए. क्यों? मिठाई में ऑप्शन कम है हमारे पास. 30% इंडिया डायबिटिक है. Point is, cultural roots खत्म हो गए. It has all become commercialized thing. And now they are playing with those cultural things. They are playing with those cultural practices. जैसे ईद आएगा, Indian sentiments हैं. So in Indian sentiments, if they have to sell sweets on Eid, they will not bring 2 Muslim families. They'll bring a Hindu family with a Muslim family. And they'll show that the Hindu family has a big heart. And they're carrying some good Cadbury stuff. And इस ईद हम मिलके खाएंगे. तो वो दिखा रहे हैं, हाँ भी तुम कर सकते हो. मेजॉरिटी किसकी है? हिंदुओं की. ज़्यादा कौन खरीदेगा कैडबरी? सब बेचने तरीके हैं. राखी पे सिस्टर नाराज होकर बैठी है, कैडबरी. तो इन शॉर्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस आपकी खत्म हो गई हैं. रिमेंबर द वर्ड आई टॉक्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन, a post-colonial term. What is globalization? Local and global. Question of NET exam. तो समोसे वगैरह भी इसलिए बेच रहे हैं मैकडी वाले. We have lost our cultural roots. हमारे cultures खत्म हो चुके हैं. That is from post-colonial point of view also. उनकी भी यही point थे that we have lost culture.
Now we are self-centered, having salaries, having limited priorities, and most of us are not in joint families. Nuclear family concept, which is again a disaster. मजबूरी भी है, जो शहर में कमा रहा है वो सबके साथ रह नहीं सकता. बट जॉइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं. There are so many nuclear families where husband and wife both are working. Children are left with maids, nannies. And these maids and nannies, you cannot leave your children, you cannot leave your kids. They are mostly on phones. Then, your religious roots. Philip Larkin's reference, church going. Philip Larkin, famous work, church going. He says people have stopped coming to church. People do not come to church. कितने लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं? तो 3. कितने लोगों को बहुत टाइम हो गया गए हुए? याद नहीं. एग्जाम टाइम पे जाएंगे, एग्जाम के आसपास रिलीजियस हो जाएंगे. रिलीजन भी तो हमने अपने अकॉर्डिंग यूज कर रखा है. नवरात्रि में नहीं कुछ उल्टा तक खाएंगे. If you do not eat something ulta सीधा on Navratri, it means only 9 days Mata is here. बाकी कोई God नहीं है. What we have done is we have simply manipulated religion. So we are losing our connection with religion. Philip Larkin mentions this thing that I have observed from my childhood that day by day people coming to church, their numbers are decreasing. लोग चर्च में अब कम आ रहे हैं, पहले ज़्यादा आते थे. Message is in modern age religion was sidelined, religious faith silent, and then he comes with the line that's a very it's a deep line, it's a very important line. He says, I wonder who will be the last. Write down that line. In this poetry he says, yes, church going is a modern poetry. I wonder who will be the last man. As people are not coming to church, one day the time will come that one last man. I wonder, कौन है? कोई तो एक ऐसा हो जो आखिरी बार है, बस आना बंद. See, if you talk to youth, 99% youth in their travel list, top 10 destination, will never have any religious shrine. Tell me if I'm wrong. And let's start with me. मेरा कोई religious shrine top 10 में नहीं था, अभी भी नहीं है. I teach modern, post modern, तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा religious नहीं हूँ. But tell me this, किसकी लिस्ट में top 10 में ये है कि once I become qualified? See, no offense to anybody, but केदारनाथ में जिस दिन आपके मोबाइल फोन रखवा दिए जाएंगे ना, कोई नहीं जाएगा केदारनाथ. आपके मोस्ट ऑफ द रिलीजियस सेलिब्रेशंस में शोर शराबा हुड़दंग है, हटा दो वो. मेक इट अ लॉ कि होली सिर्फ नीट एंड क्लीन तरीके से खेली जाएगी, एंड ऑल यू कैन डू इज चंदन. कोई नहीं आएगा. गरबा में भी डांस पॉइंट से जा रहे हैं, माता रानी के लिए कोई नहीं जा रहा है. ये रियलिटी है. इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डाइजेस्ट इट और नॉट. हटा दो. नवरात्रि में से गरबा प्रोग्राम हटा दो. आपको जो बड़े बड़े फार्म हाउस लेके गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बहुत रिलीजियस इंसान होते हैं. इनको लगता है मैं माता रानी की 9 दिन सेवा करूंगा, जनता को डांस करने दूंगा, या ये बिजनेस करते हैं. तो फिर तो जिनको डांस करने का मौका चाहिए, फोटो चाहिए इंस्टाग्राम पे, वो जा रहे हैं वहां. कितने लोग गरबा में एंट्री करने से पहले माता रानी के ढंग से पूजा करके जाते हैं? एक दो. व्हाट आई एम सेइंग, पीपल लाइक यू आर डिक्रीजिंग, धीरे धीरे कम हो रहे हैं. होली में हुड़दंग हटा दो. आपको लग रहा है होली में सब होलिका माँ और वो क्या नाम था, प्रहलाद, उसको याद भी करते हैं, ठेके पे जाते हैं, भांग लेते हैं, फिर नाली वाली और जो पक्के रंग निकालते हैं, एंड ऑल दे हैव टू रिवील देयर साइड, विच इज अगेन अ साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट वी हैव कंट्रोल्ड अस टू मच, सो वी गेट दीज डेज टू रिलीज आवर दैट साइड. तो उसमें नाली में गिर के रंग लगा रहे हैं, वो है नाम सेलिब्रेशंस होते हैं. नो ऑफेंस. दिवाली पे से पटाखे हटा दो, एग्जैक्टली सारे पटाखे हटा दो. दिल्ली में तो हटेंगे, दिल्ली में बैन होंगे, बैन होने के बावजूद बजेंगे. यू कैनॉट
टेक 30%, 40% दिल्ली इन द प्रिजन. 30% दिल्ली को आप जेल में नहीं डाल सकते. पटाखे फिर भी बजेंगे, सांस लेना मुश्किल होगा. Many of you will face the pollution after Diwali for the first time. I live here, I've seen. After Diwali, next 7-8 days, you will not be able to see the sun. आपको सूरज नहीं दिखेगा दिल्ली में. You will have eye burns, skin rashes and all. ये होगा, सांस नहीं आएगा. मैं अपने घर पे भी मुझे सांस नहीं आ रहा था, छत पे जाके बैठ गया और मुझे लग रहा है मैं कहाँ बैठा हूँ दोनों के बीच में. हाँ, इसलिए 8-10 दिन ऑफ मिलेगा तो 4 तारीख के बाद ही आना, कुछ सांस वास आएगा. हटा दो पटाखे, सिर्फ पूजा बोलो. It's Diwali, it's only Lakshmi Puja. No sweets, unnecessary shopping, no fancy dresses and no crackers. Do you think people will start celebrating? Soon they'll forget. भूल जाएंगे लोग. याद करो किसी भी एक को. And no offense again. I'm saying, see, if somebody is feeling offended, it is my individual opinion. But केदारनाथ जाने वाले भी भगवान शिव के फैन नहीं है, वो ट्रैकिंग के पॉइंट से जाते हैं. जो लद्दाख के लिए मम्मी पापा को नहीं मना पाते, वो केदारनाथ के लिए मना लेते हैं. भगवान शिव यहाँ भी हैं, इस गली में भी हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग शिव हैं. सो इफ यू आर एक्चुअली रिलीजियस, सो गॉड इज एवरीवेयर. तो भगवान ने कहा है कि माँ के चरणों में जन्नत है. ट्रैकिंग है, वैष्णो देवी ट्रैकिंग है. मैं भी शौकिया गया हूँ मैं हर जगह. केदारनाथ नहीं गया हूँ, वैष्णो देवी वगैरह कई बार गया हूँ. शौकिया ट्रैकिंग है वो. और रास्ते में जितनी शॉप्स होंगी वो सब रिलीजियस शॉप्स होंगी. या केदारनाथ में रास्ते में ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी. ऋषिकेश जाओ, गंगा नदी में पैर डाल के लोग दारू पी रहे होते हैं. वेयर इज रिलीजन? आई एम हैविंग गट्स टू स्पीक. मैं तो देख चुका हूँ ऋषिकेश में, वहां गंगा के अंदर बैठे हुए बीचों बीच. आई एम नॉट सेइंग मत करो, करो, पर यार इतना तो छोड़ो कि नदी में पैर तो मत डालो. तो ये है कि रियलिटी नहीं है. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. We have lost all these things. चलो, that was complete introduction. यदि किसी की भावनाएं हर्ट होती हैं तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा. मेरा किसी से, हाँ ठीक है, ऐसी चीजों में बोलना थोड़ा रिस्की होता है. एंड देर आर गुड पीपल हु हैव जेन्युइन. माई फादर जेन्युइनली रिलीजियस. मैं बोलता भी हूँ पापा को, पापा इतना ओवर क्यों है, रहने दो, बहुत हो गया. बट ही इज वेरी मच रिलीजियस. तो आपके भी पेरेंट्स ऐसे होंगे, मम्मियाँ फास्ट रखती हैं. माई मदर सफरिंग फ्रॉम बीपी, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कीप्स फास्ट. तो मैं कई बार चिल्लाता हूँ मम्मी पे, मम्मी खाना खाना आपको, दवाइयाँ लेनी है. बट वो कर रही हैं. ऐसे लोग भी हैं. बट दीज आर द पीपल हु आर होल्डिंग इट. एंड लेट्स सी हु इज द लास्ट. व्हाट Philip Larkin says, there are some people that are trying to hold it, but the reality is that we are moving towards a new age. Now, I will stop here and I'll take leave. थोड़ा ना headache हो रहा है मुझे, so we'll keep it here only. कल वाली क्लास करते हैं, ठीक है? ये गला खराब की वजह से ना I have to put more आवाज वाला efforts. It catches here. Okay. Tomorrow we'll do T.S. Eliot. Most probably we'll be able to wind up T.S. Eliot tomorrow. And W. Beats को भी खींचने की कोशिश करेंगे. T.S. Eliot Wasteland will take 30 minutes. Just one work will take 30 minutes. It's not long. It's actually 433 lines. तो वो बात नहीं है. बात ये it's very important. Wasteland करेंगे ना कल, तो वो बहुत important है. Any line, any reference, and they've asked many tricky questions. One easy question that has been asked from T.S. Eliot in last NET exam, set them in order. 4 ड्रामा दे दिए थे, confidential clerk, confidential agent and this one, family reunion, murder in the cathedral, एक secret कुछ और work है उसका missing is cocktail party. 4 works to set them in order. That was the easy question. Normally they don't ask easy questions from T.S. Eliot. Plus modern literature they will not ask surface level question. If they ask match the following surface level question, it's good. Assertion, reason, maximum questions are from moderns. That's why we have to understand what is modernism. So I'll see you tomorrow. We'll deal with around 40 plus modern writers. वहाँ भी 40 writers तो हैं. 15 plus big writers. Rest names and all. चलो, see you all. Take care.